Yeah, please go. Hi, my name is Gaurav Srivastava. I'm a civil engineer by profession, and I've been working in the consulting firm for last more than 3 decades. And my experience has been mainly working with a global consulting firm based out of UK, France, and Singapore. And my expertise and experience is mainly dealing with the transportation infrastructure projects. Wealth of experience in airport projects, metro, railways, and ports, and all other transportation related projects. Currently, I'm working with a French consulting firm looking after the business across India as well as in South Asia. So the first project which we did was Delhi International Airport Terminal 3. So where we worked with a team of designer and planners. तो हम सब ने मिल के एक कंप्लीट मास्टर प्लान प्रिपेयर किया. Again, it was very interesting. We had experts from UK as well as outside of India, because at that point of time India में expertise उतनी बहुत थी नहीं, where limited people are there, and that too also they were mainly working in the government sector. So then when this area of aviation was open to privatization, and there were 2 large developers who came for who shown their interest for developing the 2 large airport, Delhi and Mumbai. हमारी टीम को ऐसा मौका मिला कि हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट के साथ काम कर सकें. तो हमने दोनों एयरपोर्ट पे हम लोगों ने एडवाइस किया टू द डेवलपर्स that what should be their bidding strategy, because they were bidding as a private entity. तो उनको कॉस्टिंग का आइडिया देना था, उनको टर्मिनल बिल्डिंग की कैपेसिटी का आइडिया देना था. तो हम सारे लोगों ने मिलके काम किया एंड उनको एक वी कॉल इट एज ए प्री बिड सर्विसेज. हमने प्री बिड सर्विसेज उनको दी कि दैट व्हाट स्ट्रैटेजी दे शुड हैव इन टर्म्स ऑफ बिडिंग. उस समय एक्सपर्टाइज इतनी थी नहीं वेयर कि हम इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट की बात कर सकें, क्योंकि उस समय एयरपोर्ट मेनली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप करती थी, जो कि मेनली लोकल एक्सपर्ट्स हायर करती थी. बट वो अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली एंड वी हैव बीन गिवन फुल फ्रीडम बाय द आवर क्लाइंट कि आप यू पुट योर आइडिया, पुट योर बेस्ट आइडिया कि एयरपोर्ट विच इज़ अ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट कैन बी डिज़ाइन. एंड उसका जो हमारा हॉरिजन ईयर था दैट वाज 2036, 30 ईयर कंसेशन पीरियड वाज गिवन. सो लुकिंग आफ्टर कि 30 साल के बाद में हाउ द एयरपोर्ट, हाउ द एविएशन इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी देयर. सो दैट वाज अ चैलेंज कि आज से 30 साल के बाद के ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए हमको एयरपोर्ट को डिज़ाइन करना था. सो हमने क्या किया, द फर्स्ट थिंग वी डिड, वी सेड दैट कि वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल. The design has to be flexible, that it can be changed depending on the requirement. So that was a design concept we prepared, and airport was open to traffic in 2010, and that was a huge success. So जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट का कि T2 जो अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो उस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था. तो T2 को हमको ऑपरेट भी करना था, एट द सेम टाइम हमको T3 का डिज़ाइन भी करना था, T3 का मास्टर प्लानिंग भी करना था. दैट वाज अ ह्यूज चैलेंज. एंड अगेन क्योंकि हमारा टारगेट था 2010 का कॉमनवेल्थ गेम एंड हमारे पास टाइम बहुत कम था, वो हमको प्लान भी करना था, डिज़ाइन भी करना था, कंस्ट्रक्ट भी करना था. सो वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था, टाइम कंस्टेंट. बट फॉर्चुनेटली दो इंडिया के जो बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने इस पर काम किया एंड दिन रात काम किया लोगों ने. एंड कॉमनवेल्थ गेम के पहले ही वो एयरपोर्ट तैयार था एज ए इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड एयरपोर्ट. जब एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ, आपके 2 साल के बाद की आपकी स्टोरी सुनाता हूँ मैं.
This was told by the CEO of the airport operator at that point of time. There's a one person was traveling from Dubai and he wanted to go to Singapore. And जब वो ट्रांजिट में आया तो जब दिल्ली एयरपोर्ट पे वो पहुंचा ट्रांजिट में, so he started crying. So when people say कि why you are crying, you are in India, you are an Indian, you have landed into your capital city. So he could not believe, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि दिल्ली में इस तरह के एयरपोर्ट पे वो लैंड किया है जहाँ पे बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का लगता था. तो अपने आप को विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं अपनी कंट्री में हूँ. उसको लगा मैं किसी दूसरी कंट्री में पहुँच गया हूँ बाई मिस्टेक, या मैंने कोई गलत फ्लाइट ले ली है. तो उसको लोगों ने समझाया, आधे घंटे तक बैठ के समझाया कि भाई आप इंडिया में ही हो, आप दिल्ली में ही हो. द बिगेस्ट चैलेंज वाज, अगर आपने उस एयरपोर्ट की साइड में देखा हो, शिव मूर्ति वहाँ पे है. सो द फ्लाइंग पाथ हमको जो डिज़ाइन करनी थी, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना था कि शिव मूर्ति से फ्लाइंग पाथ पे कोई असर नहीं पड़े. तो हमारे एक्सपर्ट्स ने उस पर काम किया. और अदर चैलेंजेस से वाज कार पार्किंग, दैट जो हम लोगों ने ट्रैफिक एस्टिमेट किया, उससे जो नंबर ऑफ कार्स निकल आ रखे, दैट वाज अ ह्यूज नंबर. सो द लोकेशन ऑफ कार पार्किंग वाज अ चैलेंज कि हम कार पार्किंग कहाँ रखें. अगर आप if you work in aviation field, there are two sides, one is a land side and it is a air side. So हम air side में तो पार्किंग नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी ऑन लैंड साइड. एंड लैंड साइड में भी स्पेस कॉन्स्टेंट थी बिकॉज T2 एयरपोर्ट जो उस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसको ऑपरेट करना था, एज वेल एज हमको एक लैंड एरिया निकालना था जहाँ पे वी कैन बिल्ड द पार्किंग. सो लोकेशन ऑफ पार्किंग, अगर आप लोगों ने अभी देखा हो, दैट पार्किंग विच इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ T3 टर्मिनल, दैट लोकेशन सेलेक्शन and how do we connect with the arrival as well as departure, that's for another challenge जो हम लोगों ने smoothly after lot of study, lot of pain, we could resolve that part also. अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें, ऑल मेजर एयरपोर्ट, यू टॉक अबाउट हीथ्रो और CDG चार्ल्स de Gaulle in Paris and or in US airports, सारे airport is all linked with the city through an airport express line. The only thing is missing, in my personal view and my personal opinion, the traffic would have been more if you compare with Heathrow. Most of the people goes to Heathrow airport using Heathrow express line, but Delhi में I think it's mainly because of connectivity, the location of the station and वो कैसे locate किया है and connect किया है with the Delhi metro, that is one question mark. But the other big question है कि उसका success उतना नहीं हो पाया is the whole mindset of the people in India, particularly in Delhi, where all the rich people and even अभी आज में middle class also like to have a travel by car. They feel prestige in traveling by car. They don't feel so much of prestige in traveling with metro. That's one factor. But if you see over the course of time, as दूसरे country में हुआ है, even Delhi also this project is going to be successful. It's already successful because बहुत सारे एयरपोर्ट ऑपरेटर, एयरलाइंस ऑपरेटर, people जो लोग काम करते हैं, they are heavily using their airport express line. First preference is Delhi airport, primarily because I was involved in the design and the master planning. But in terms of easiness, my preference will be Mumbai. Mumbai Terminal 2 is very focused on the passenger. Passenger don't feel stress. Northeast part of the country, the smaller airports are there, which is very easy. You don't need aero bridge, you don't need ladder.
Of course, you need a ladder, but there no need aero bridge. You just get down, walk, and you take your luggage and you can go back. It's within 5 to 10 minutes you are outside of airport. That airport, the small airport, is very interesting for me. So I like the small airport in northeast part of the country. Favorite airport is Imphal. मैंने बहुत विजिट किया है मणिपुर में, working on a number of projects. So Imphal I find is very passenger convenient airport, mainly because of there are not many traffic. There is no night landing facilities there. So the last flight is at around 4 p.m. उसके बाद कोई वहाँ पे flight है नहीं. And Manipur being a fantastic place in terms of the weather, you feel very convenient and you feel energized once you land up into Imphal airport, looking into the scene. The other interesting airport I find when I travel a lot is a Dharamshala. Dharamshala is brilliant, excellent. It's a masterpiece, the Dharamshala airport. The airport is inside a valley. The way, the moment you land, you will see the mountain around yourself. If you turn 360, you will find the mountain, because the airport is in the valley. So that's another very interesting airport in India. Aviation कैसे evolve हुआ है? तो अगर हम ग्रोथ की बात करें, सो इंटरनेशनल लेवल पे एविएशन ग्रो कर रहा है अराउंड 4.5%. बट अगर हम इंडिया की बात करें, फिर कंपेयर लास्ट 1 decade, जो ग्रोथ था, इट वॉज मोर देन 25 years, बिकॉज द ट्रैफिक इंक्रीज कर रहे थे. एंड पर्टिकुलरली अगर आज की बात करें, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर, आई थिंक द मेन फैक्टर इज इकोनॉमिक फैक्टर. लॉट ऑफ पीपल want to travel by plane because of various factors. I think time saving, and बीच में बहुत सारी जो low cost airlines आई थी, that was one factor जिसने boost किया aviation sector को. So aviation definitely grow करेगा, and currently the India aviation market is the 3rd largest in the world. So we are the 3rd largest, but in my personal opinion, I think it's another 1 decade or another 15 years, we will see India is going to be in the 2nd largest aviation industry. A lot of airlines are buying planes. Around 1500 new planes are coming in India. मेरी पहली फ्लाइट थी somewhere around 1998. मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भुवनेश्वर भेजा गया था, बिकॉज़ एक हमारा मास्टर प्लानिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था भुवनेश्वर में. एंड जो हम लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट बनाया था, दैट वाज इन A1 साइज़ ऑफ ड्राइंग. सो उसको हम ट्रेन में नहीं आ सकते थे. एंड 1998 में ट्रैवलिंग बाई प्लेन वाज अ बिग थिंग. आई थिंक दैट उस समय मेनली इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया ऑपरेट करती थी. आई डाउट कि उस समय कोई प्राइवेट एयरलाइंस आई थी. आई थिंक बहुत पुरानी प्राइवेट अगर एयरलाइंस की बात करें, मोदी लुफ्ट एक एयरलाइंस हुआ करती थी उस अराउंड 97-98 में. आई थिंक मोदी लुफ्ट था, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, 2-3 ही एयरलाइंस हुआ करती थी. तो मेरे को इंडियन एयरलाइंस वाज डोमेस्टिक एंड एयर इंडिया वाज इंटरनेशनल. सो इंडियन एयरलाइंस में करने का मौका मिला. So because all credit and thanks goes to that the big size drawing. उस ड्राइंग को बिकॉज हम ट्रेन में नहीं ले आ सकते थे, तो उस ड्राइंग को मैं अपने साथ कैरी किया इन द प्लेन. एंड बट उसको रखने के लिए कोई जगह नहीं थी. तो फिर जो एयर होस्टेस थी उसने आइडिया मेरे को दिया कि आप लास्ट वाली सीट में बैठ जाओ. लास्ट वाली सीट में बिहाइंड द सीट आप अपने उस ड्राइंग को रख सकते हो, विच वॉज अ वेरी बिग साइज drawing. So that was my first experience in traveling Delhi, Bhubaneswar in Indian Airlines, and always first thing is always exciting.
सो हम लोगों ने जैसे दिल्ली एयरपोर्ट डिज़ाइन किया था, सो अगर लोगों को पता नहीं है तो देयर वाज अ लॉ कि आप 80 किलोमीटर के बियॉन्ड दैट एनी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट आप उसके एयरपोर्ट नहीं बिल्ड कर सकते हैं। बट उसके पर बहुत सारी स्टडी हुई, बहुत सारी डिबेट भी हुई, इवन पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट में भी ये सारे क्वेश्चंस उठे कि दिल्ली में इतना ट्रैफिक है, हमको एक और टर्मिनल की ज़रूरत पड़ सकती है, टर्मिनल 4 और टर्मिनल 5। बट एज़ पर जो हम लोगों ने मास्टर प्लान बनाया था, एज़ पर मास्टर प्लान T1, T2, T3 एयरपोर्ट थे एंड एक क्रॉस टैक्सी ब्रिज भी बनाना था, तो क्रॉस टैक्सी ब्रिज अभी बन गई है। बट फॉर ए न्यू टर्मिनल एंड फॉर ए न्यू बिल्डिंग न्यू एयरपोर्ट वाज अ डिबेट, एंड दैट केवल दिल्ली में नहीं, इवन अगर आप यू से मुंबई में भी जो मुंबई टर्मिनल T2 है उसके साथ विद इन नवी मुंबई एयरपोर्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो भी स्टार्ट होने वाला है। सो दिल्ली एयरपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए टू हेल्प द ट्रैफिक ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट का प्लान चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था बाय द यूपी गवर्नमेंट। बट बिकॉज ऑफ दैट लॉ कि दैट विद इन 80 किलोमीटर्स ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट एक नया एयरपोर्ट नहीं बन सकता, बट दैट लॉ वाज डाइल्यूटेड एंड देन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया। सो जेवर एयरपोर्ट जो भी अंडर कंसेशन है विद द प्राइवेट डेवलपर इंटरनेशनल जो बना रहे हैं। सिमिलरली मुंबई में भी नवी मुंबई जो एक अनदर प्राइवेट डेवलपर बिल्ड कर रहा है। सो इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस मेट्रो सिटी देयर इज अ ह्यूज सक्सेस, ह्यूज डिमांड। दिल्ली एयरपोर्ट में जो चीज़ अभी नई आने वाली है इस कॉल्ड एयरपोर्ट पैसेंजर मूवमेंट, APM। अगर आप बाहर के विदेशों में जाएं तो एयरपोर्ट में बहुत 2-3 एयरपोर्ट के टर्मिनल को यूज़ करने के लिए APM इज देयर, बट इंडिया में APM कॉन्सेप्ट अभी टोटली नया है। बट आई थिंक वेरी रिसेंटली लास्ट मंथ ओनली द ऑपरेटर हैज floated tender for APM, where the operator will come, the APM operator will come, they will buy the train, they'll operate the train between terminal 3, 2 and then Aerocity area, so that आपको all the area में आपको केवल APM से मूव करना है, आपको कुछ व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। That is going to be new and exciting thing for Delhi airport. So मेरी फेवरेट है एज ऑफ टुडे इज़ विस्तारा, which is really an international level of airlines, mainly because of the kind of plane they have got, जो facilities होती हैं। एंड since मैं बहुत सारे ट्रैवल किया, सो आई एम अ प्लेटिनम मेंबर ऑफ द एयरलाइन, सो वो से बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं, अर्ली चेक इन। एंड विस्तारा के पहले जब विस्तारा नहीं आई थी उसके पहले जेट एयरवेज, जो कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट एयरलाइंस थी। सो आई ट्रैवल्ड अ लॉट ऑन जेट एयरवेज, नॉट ओनली इन इंडिया बट विदेशों में भी मैं केवल जेट से ही ट्रैवल करता था। तो जेट एयरवेज में जब भी मैं वापस अपनी कंट्री आता था तो वो जो इंडियन खाना जो मिलता था, वो इंडियन खाने का टेस्ट आता था। बिकॉज आप विदेश में आप रह के एक हफ्ता 10 दिन रह के आओ तो आपको वो एक टच जो है अपने देश के खाने से जो टच है वो टूट जाता है। तो एक बहुत गैप सा लगता है कि इंडियन फूड नहीं मिलता। सो दैट वाज अ बिग थिंग कि आप द मोमेंट यू सिट इन द एयरप्लेन एंड एक इंडियन फूड आपको परोसा जा रहा है, दैट वाज इंटरेस्टिंग थिंग। एंड अनदर स्टोरी, जो इतना ट्रैवल करने के बाद आई गेट वेरी फेमिलियर विथ जेट एयरवेज स्टाफ, सो I never forget that thing that at one point of time I was landing in Heathrow airport and जैसे ही since I was traveling in a business class, that जैसे ही गेट खुला the ground staff was there, he recognized me, he said welcome Mr. Gaurav to London. So that was really surprising and which I never forget, that in a foreign country कोई unknown आदमी आपको नाम से बुलाए। So that was that. So currently is a Vistara of course. आई थिंक जो फर्स्ट थिंग आप किसी भी एयरपोर्ट में जाओ, इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द स्टाफ बिहेवियर। इफ यू गो टू एनी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, हाउ द एयरलाइंस स्टाफ बिहेव,
how much they collaborate and coordinate and guide you. That's define the passenger feels really comfortable that I have come into a right airport. And if you're entering into any airport for the first time, either domestic or international, I think the most interesting and convenient thing is the signage. I think signage give a lot of comfort to the passenger that which direction they have to go, कहाँ पे कौन सी facilities है, कहाँ पे हमारा gate है, कहाँ पे retail है. So signage play a big role. I think there are a lot of changes has happened in last few years in terms of airport design. And in terms of retail, I think India mein, if you see the airport retail industry is booming like anything. I think there's a huge change. If you see airport like even in Delhi or Bangalore, where Delhi they are developing an aero city across the Delhi airport. A lot of hotels have come, shopping complex are there, the dining places are there. So that's an interesting concept that now people fly to Delhi in the morning, do their meeting at the aero city, and then goes back to their destination in the evening. So that aero city has played a key role, and even the people in the city also come to dine at the aero city because that they are conveniently located. The transportation is easy. There's not much congestion, and you get an international level of dining experience. So that thing is there. And go to Bangalore airport, I think people, although it's far away from the CBT and the main city, but that the whole airport, the way it has been developed, they focus on a lot of retail, lot of shopping, lot of eating joints are there. That makes an airport unique. अगर हम एयरपोर्ट एयरलाइंस ऑपरेटर की बात करें, आई थिंक आज से कुछ साल पहले ऑप्शंस बहुत थे. जब लो कॉस्ट एयरलाइंस आई, सहारा एंड बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस आई जो एक चीप इकोनॉमिकल एयरफेयर हायर करती थी. बट आज की डेट में अगर आप अभी का जो देखें, जो एयर इंडिया विस्तारा का जो मर्जर हुआ है, वी हैव टू रियली सी दैट हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग. बिकॉज उसमें ऐसा तो नहीं है कि द नंबर ऑफ प्लेयर्स आर बिकमिंग लेस. द मोमेंट द नंबर ऑफ प्लेयर विल बिकम लेस, द प्राइस इज़ गोइंग टू बी हाई. सो देयर इज़ नो कंपटीशन इज़ देयर. सो in my opinion, I think there is a demand for more airlines to come. अभी भी बहुत सब मार्केट, इतना बड़ा मार्केट है एविएशन इन इंडिया, जहाँ पे हम बहुत सारे प्राइवेट एयरलाइंस और आ सकते हैं. और चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम कैसे जो कॉस्ट है उसको हम कैसे रिड्यूस करें. आज की डेट में भी पर्टिकुलरली पीक टाइम the price on the higher side, if you compare with last year, so there is no concept of low cost airlines. It's a normal airlines where the prices are go high if there is a huge demand, but that low cost airlines requirement is there. If you अगर आप कंपेयर करें इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के, अभी भी यूरोप में और बहुत सारे लो कॉस्ट हैं. दे आर रियल लो कॉस्ट एयरलाइन. The cost of ticket is much cheaper, so they are more economical. But जो हमारे यहाँ पे जो भारत सरकार की है कि हवाई चप्पल से हवाई यात्रा, ये कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत स्कोप है इसको आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज प्राइसेस हैज़ टू बी कंट्रोल. जहाँ तक एयरलाइंस का है, तो जो मैंने बहुत ट्रैवल किया, श्रीलंकन एयरलाइंस आई लाइक अ लॉट बिकॉज मैंने बहुत ट्रैवल किया उसमें. तो देयर वाज अ गुड ऑपरेटर. इन टर्म्स ऑफ वर्स्ट एक्सपीरियंस, जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है जो मैंने किया था, इज़ मलेशियन एयरलाइंस. आई ट्रैवल्ड ओनली वंस. उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिया कि इसके बाद से मैं कभी मलेशियन एयरलाइंस में नहीं पहुँचूँगा. Not because of what happened in MH370, not because of that, where the whole aircraft still they're not able to locate MH370.
but the behavior of the air hostess, because I ordered vegetarian, they given me beef. So for any person who haven't had any beef, and she was insisting that there is no other option, आपको beef ही खाना पड़ेगा. So that was my worst experience. And from that day, I've decided that I will never travel to Malaysian Airlines. So the best experience जो मेरा international में is Virgin Atlantic. अभी मैं recently travel किया to Heathrow, London. I think the plane was fantastic. On time, departure time, arrival on time, and there's a complete relaxed environment was there. The kind of food they offered, being an Asian vegetarian food, was brilliant and excellent. I think exceptional, and the kind of services that they offer. So I'll prefer Virgin Atlantic as my one of the best international airlines. Other side of the story is that how discomfort we are there. I think the turbulence is a big thing. I think although one being a frequent traveler, also there's always element of fear is there, that and particularly if you're traveling, I traveled a lot on Delhi-Mumbai sector, Delhi-Mumbai-Delhi sector, and during monsoon I think traveling is really very difficult. So I've faced a number of times. One of the worst, I can mention two worst experience. One I was traveling from Imphal to Meghalaya, and it was raining like anything. And the whole experience was, if you're traveling in a auto in Delhi, auto rickshaw in Delhi, the same experience was traveling in the plane. Like I was literally feeling that I'm traveling in an auto, that the plane was going right and going left. At the same time, there's so much of turbulence. That was first bad experience. And second experience, I was traveling once from Delhi, London, and there's a big air pocket was there, and the plane just dropped down. So for a few seconds, everybody thought that we are gone, we are now going to die. But I think it takes minimum half an hour to everybody to settle down that we are still alive.